So now you need to assume the width of the lacing bar as 60 mm. Then you need to calculate the thickness. Thickness of the lacing bar again. So thickness of the lacing bar 1/40 into L effective. So it is greater than 10.39 mm. So आपको जो value मिलती है that is 10.39 mm. So you can take it as 12 mm. Now again you can check for this, that is A1 by R1, that is 3.02 is less than 20, is less than 20.538. So here your check for the local buckling is okay. मैम फेल होना चाहिए ना? Wait a minute. एक minute. 0.7 into आपका जो यहाँ पे A1 by R1 का रेशियो आया था वो आया था 5.24 and here the ratio comes up to be 3.02. This is fine, that is 0.7 into lambda less, that is 20.538. ये बराबर है. Only this A1 by R1 ratio. A1 by R1 ratio is going to change when you are going to change the values for the L effective. So doesn't make any difference. 5.324 is less than 58 and also it is less than 2.20 point this. बट हमें हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हमें जो चाहिए ये चेक अगेंस्ट लोकल बकलिंग. It is okay if you are considering with the 45 also and it is okay if you are going to consider it with 60 also. बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए. हमें लोकल बकलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगी A1 by R1 रेशियो की वो हम कंसिडर कर सकते हैं. तो अगर 5.24 भी आ रही है तो इट इज फाइन, नो नीड टू चेंज. बट 60 से जस्ट मैंने बताया कि ये 360 अगर कंसिडर कर रहे हैं तो मोर कम वैल्यू हमें मिलती है. सो कोई भी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं. आइदर यू कैन कंसिडर दिस वैल्यू or either you can consider this value, that is 3.02. Both the values are okay. मैम डाउट है. हाँ महेश. मैम यहाँ पर 50 बड़ा नहीं है, 50 छोटा नहीं है 20.538 से. Yes, that is not the reason. हमें क्या चाहिए, हमें चेक अगेंस्ट लोकल बकलिंग के लिए जो भी वैल्यू मिनिमम रहती है तीनों में से हम वो वैल्यू कंसिडर करते हैं फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस. सी द प्रीवियसली सम जो भी हमने सॉल्व किए, जो तीनों में से जो भी छोटी वैल्यू रहती है डेट वी आर गोइंग टू कंसिडर. बट यहाँ पे हमें पहले इसमें हमें कितनी वैल्यू आई थी, 5.24 आई थी और अभी जो वैल्यू आई है डेट इज 3 पॉइंट समथिंग आई है. सो ये 60 कंसिडर करने के बाद में हमें और छोटी वैल्यू मिल रही है इसलिए हमने 60 कंसिडर किया. इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस वैल्यू देन आल्सो इट इज फाइन. दोनों भी डिजाइन ठीक है. मींस इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस आल्सो देन आल्सो इट इज ओके एंड इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस आल्सो देन इट इज ओके. बट ये हमने इसीलिए कंसिडर किया क्योंकि हमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मिल रही है इसलिए हमने 60 कंसिडर किया है. Understood? Okay, all of you are done up till here.
Should I proceed further? यहाँ तक के सबका? Can I explain you? You can write it afterwards. I will share the entire PDF in your groups. Yes, Josh, Mahesh, can I explain you? Understood, ma'am. नहीं, और further design can I explain you? You can write it afterwards. Okay, ma'am. Because we need to complete this topic by today itself, so I will just explain you. You can note down all this afterwards. Now you need to calculate the transverse shear. So again, for calculating transverse shear, that is transverse shear calculate करने के लिए again आपके पास में क्या formula है? That is 2.5% of the factor load. So transverse shear आपको मिलता है 2.5% of the factor load. Factor load है 1495. तो VT आपको मिलता है 37.37 किलो न्यूटन. Then VT by 2. So 37 by 37 by 2. तो आपको मिलता है 18.68. That is nothing but this value, that is 18.68. Then for calculating F, you are going to consider it as cos 30. So cos 30 consider करने के बाद में आपको ये जो incline force है ये F. You are going to get this incline force F. तो F consider किया तो F आपको मिलता है 21.56 किलो न्यूटन. That is nothing but the force. Now you need to do the check for the local buckling. Already we had completed. Now you need to do the check against buckling of the lacing bar. So check against buckling of the lacing bar के लिए जो भी आपकी lacing bar की value आएगी, that should not be more than 145 according to your IS 800 2007. हमेशा जो भी value आएगी that should be less than 145. तो R minimum calculate करो. R minimum calculate करने के लिए you are having the formula, that is thickness upon root 12. So thickness आपकी कितनी आई थी? 12. 12 by root 12. तो आपका R minimum आता है 3.46. Then you need to calculate the lambda for the lacing bar. So lambda for the lacing bar calculate करने के लिए again you are having the formula, that is 0.7 into L effective upon R minimum. So L effective just now you had calculated, that is 415.7 and R minimum is 3.46. So आपको lambda for the lacing bar मिलता है 84.10. It is less than 145 according to your IS code. So this check is okay over here. Yes, any doubts up till here? Everyone understood the check against buckling for the lacing bar? Should I proceed further? Yes, Judge, Dhara, Mahesh, any doubts? No, ma'am. Now compressive strength of the lacing bar. So for calculating the compressive strength of the lacing bar, अगेन आपको पीडी कैलकुलेट करना है. सो पीडी कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहले आपको ए ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज इफेक्टिव एरिया. सो आपने विड्थ कितनी एज्यूम की है? 60 और थिकनेस आपको मिली है 12. तो उसमें से इफेक्टिव एरिया आपको मिलता है 720 mm स्क्वायर. देन यू नीड टू कैलकुलेट एफसीडी फ्रॉम योर आईएस कोड फ्रॉम द टेबल नंबर 9C पेज नंबर 48. तो एफसीडी आपको मिलता है 129.26 by using method of interpolation. उसमें से you can calculate PD. So PD की वैल्यू आती है 930. So it is greater than the value of the force. So here it is okay. Now you need to calculate for the welded connection. So for the welded connection, size of the weld as minimum it is given to you, that is 3 meter. Then spacing, that is 5 meter. This is from the table number 21 of your IS code. Refer the table number 21 for the spacing.
तो जब आपका साइज ऑफ द वेल्ड अगर 3 मीटर है तो स्पेसिंग आपका मिलता है 5 मीटर. Then size of the weld will be 3/4 into 12.5. So what is 12.5 over here? Yes, anyone? 12.5 is nothing but the thickness of the web, that is TW. This value you will get from the steel table. Diagram में देखो हमने draw किया है, that is thickness of the web. It is 12.5. So size of the weld आपको मिलता है 9.37. You can provide it as minimum 6 mm or 8 mm according to your convenience. Then after size of the weld, you will get the throat thickness. Throat thickness के लिए again you are having the formula, that is 0.7 into as provided, that is the size of the weld. Size of the weld आपने कितना लिया था 6. So 0.7 into 6. Throat thickness आपको मिला. Throat thickness आपका आया 4.2 mm. Now you need to calculate FWD. So for calculation of FWD, you are having the formula, that is FWN by gamma MW. That is the partial safety factor. So FW by root 3. What is FU? That is nothing but the concrete steel grade that is given to you, that is 410 by root 3. इसमें से आपको मिलेगा FWN, that is 236.71 Newton per mm square. Substitute the values in this formula. मैम हाँ एस प्रोवाइडेड की वैल्यू 6 कैसे आई? किसकी? एस प्रोवाइडेड As provided just now we had calculated ना. ये देखो यहाँ पे साइज ऑफ द वेल्ड जो आपको मिला था 9.37, उसका आपने कितना कंसीडर किया? 6 mm कंसीडर किया. आप यहाँ पे 8 mm भी कंसीडर कर सकते हो, 6 mm भी कंसीडर कर सकते हो. तो ये 6 mm ही हमने यहाँ पे यूज किया इन थ्रोट थिकनेस. अंडरस्टूड? यस मैम. फिर उसके बाद में वी नीड टू कैलकुलेट FWD. सो FWD के लिए FWN, that is 236.71 upon partial safety factor, that is gamma m, that is 1.5 for the welded connections, that is from the table number 5, page number 30 of your IS code. So FWD की आपको वैल्यू मिलती है 157.806 Newton per mm square. Or you can calculate FWD by P upon L effective into throat thickness. So P, that is 21.56 upon L effective into throat thickness. So FWD आपको मिलता है 32.52 mm. Then L provided will be 60 plus 2 into L1. अभी L1 is nothing but this one. So L1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? B is nothing but the width of the lacing जो आपने assume किया है, that is 60 into cos 30. ये 60 ये आपको L कैलकुलेट करना है. So 60 upon cos 30, तो आपको L provided मिलता है, that is 198.56. So L provided should be greater than your L effective. So therefore your design is okay. So here we had completed the design of the lacing system for the bolted as well as for the welded connections. I hope everyone understood up till here. Any doubts? So those who are not given the attendance, give your attendance in the chat box.